नमस्कार। आप सभी का इंडिपेंडेंट रिसर्च एथिक्स सोसाइटी द्वारा आयोजित आयुष समृद्धि ज्ञान गंगा में पुनः स्वागत। हम 1467वें पड़ाव पर टूरिज्म डे ऑफ यूएस सेलिब्रेट कर रहे हैं। सेफ टूरिज्म, हेल्थी टूरिज्म। हमारे शकत जी और निशांत जी हमें गाइड करेंगे इस विषय पर। मैं आदरणीय अग्निहोत्री सर से स्वागत भाषण की व मंच संचालन की प्रार्थना कर। धन्यवाद प्रोफेसर पवन शर्मा जी। नमस्कार। और हम अपने आज के इस वेबिनार जो टूरिज्म के टॉपिक पर हम दोनों ने अरेंज की है, उसके दोनों गेस्ट स्पीकर्स डॉक्टर शेखर कुमार बसु जी और डॉक्टर प्रोफेसर निशांत शुक्ला जी, दोनों का हृदय से वेलकम करते हैं, उनका स्वागत करते हैं। और जैसा कि प्रोफेसर पवन शर्मा जी ने बताया कि टॉपिक के अनुसार विशेष रूप से टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए ये दिन मनाया जाता है। अब तो स्थिति जो वर्ल्ड टूरिज्म की है वो धीरे धीरे इन्हीं छोटे छोटे कंट्रीज के द्वारा या नेशनल से इंटरनेशनल हो चुकी है। तो इंटरनेशनली हमारे पास टूरिज्म के बढ़ावा देने के जितने भी पॉजिटिव पॉइंट्स होते हैं, उसमें एक कंट्री के रहने वाले लोगों का दूसरे कंट्री के संस्कृति, सभ्यता, रेसिपीज, लैंग्वेज, ड्रेसेस, रिचुअल्स और उनके वर्शिप प्लेसेस और सोशियो इकोनॉमिक, इवन एक्सटर्नल अफेयर्स के सारे सेक्टर्स को कवर किया जाता है। हमारी डाइवर्सिटी को भी, हमारी नेचर को, हमारी रिवर्स को, एवरी सोर्स ऑफ लाइफ जो है उसको भी शेयरिंग के लिए ये इंटरनेशनल टूरिज्म और टूरिज्म एज सच बहुत मायने रखता है। निश्चित रूप से इंटरनेशनली इसमें करेंसी भी इनकर होती है और एक जो ब्रदरहुड है, एक लाइवलीहुड है, दोनों चीजें मिलती हैं। और आपसी एक्सचेंज से टूरिज्म को निश्चित रूप से एक स्थान के बारे वाले जानने वाले व्यक्ति को विश्व के विभिन्न देशों तक के बारे में जानना और उनको स्वीकार करना, बढ़ावा देना, इसके रास्ते खुलते हैं, इसके कॉन्सेप्ट खुलते हैं। और हमारा एक मनुष्य जो एक सोशल एनिमल कहा गया है, हमारी जो सामाजिक मेंटल स्टेटस होता है उसको भी बढ़ावा मिलता है। सपोर्ट में फाइनेंशियल सपोर्ट, इकोनॉमिक सपोर्ट, पॉलिटिकल, एक्सटर्नल अफेयर्स, हमारे जॉब का जो पॉसिबिलिटीज होती हैं इंटरनेशनली, वो सब चीजें आती हैं। और हमारे गेस्ट स्पीकर्स इन सभी पहलुओं को, इन सभी एस्पेक्ट्स को बहुत अच्छे से डील करने जा रहे हैं, शेयर करने जा रहे हैं। तो एक बार बहुत बहुत सबका स्वागत है। और हमारे इस वेबिनार से जुड़े हुए प्लेटफॉर्म के सभी डिग्निटरीज का भी हम बहुत अच्छे से स्वागत करते हैं। प्रोफेसर द्विवेदी जी का, डॉक्टर तेजिंदर जी का, प्रोफेसर विजय कुमार द्विवेदी का, सभी का स्वागत करते हैं। और आदरणीय डॉक्टर शेखर कुमार बसु जी को बहुत ही आदर के साथ में हम इनवाइट करते हैं उनके आज के बहुत ही सारगर्भित, बहुत ही थॉट ओरिएंटेड प्रेजेंटेशन के लिए। बहुत बहुत स्वागत है आपका डॉक्टर शेखर कुमार बसु जी। नमस्कार। नमस्कार। मैं थोड़ा क्षमा चाहता हूँ, आज मेरा इंटरनेट का थोड़ा प्रॉब्लम चल रहा है, तो एक साथ वीडियो और ऑडियो शायद नहीं आएगा, इसलिए मैंने वीडियो को थोड़ा शट डाउन रखा है। तो am I audible? हाँ, क्लियरली ऑडियो। ठीक है। तो I am keeping the video shut because like with the video the voice is getting distorted for some internet related issues today. So as I will continue without the video today. Okay, sorry for the inconvenience. Okay. Should I start? Yeah, yes please. Okay. Thank you very much. Today's 1467 episode of our series of the webinar. Thanks to all the members of Ayush who has made this dream come true. We are heading very steadily towards 1500, which is a matter of great pride. And as a part of the Ayush family, I also am a very, very proud member of this organization, and also thanking you that you have not just restricted yourself to Ayurveda. You have expanded to every other domains of civil life, which is important, like medicine and our health and our psychology and how what we eat, how we live, how our family runs, everything is interconnected. So tourism is also a part of that. In that sense, tourism broadens the mind.
the more we get to see the other world, the more we get, even within India, like, we say that India is like a Mahabharata. Everywhere, if you go in India, the diversity that we will see with language, culture, food, cuisines, dresses, music, dances, it's country within a country. So it is truly a subcontinent in the very true sense. But basically, while we are talking about tourism, why I appreciate this topic today is not because, we have already talked a lot about promotion of tourism. And I think the Indian government has done a significant, or even the state governments within the government of India has done significant contributions towards the spread of tourism. We have good transport. There is busways, there is railways, there is airway networks and stuff all across the country. There are some remote areas which still need some development, but I still would say that those remote areas where it is not so easy to travel, but if you could make into those areas, it is spectacular beauty. So if we have too much of infrastructural development in those areas, we may start losing the impact of such beauties in that particular part. But my focus today is not about the promotion of tourism, because I sincerely believe that within this 21st century, on this new millennium, the government of India and the Ministry of Tourism, as well as the state governments and the union territories, have done significantly in promotion of tourism, in establishing various centers, whether it is historical, archaeological, architectural, or political, economical, whether it's national parks, reserves, heritage sites, religious sites. The development, I think, is being seen across every states in India. I've traveled extensively and I have seen that the new tourism center, or even the old tourism center, how they have the old Jagannath temple in Puri, how it used to be, and how it has transformed with constructions made around, say, 20 kilometers around the perimeter of the temple has been cleared, new roadways has been constructed, and now you could travel so easily inside the temple, and the huge crowd that visit the temple is very well managed. There is a little bit of mismanagement. I mean, that may happen in big temples which gets overcrowded. But I will say, back from 20 years, these have changed significantly. Kalighat temple and other places in West Bengal, which used to be super crowded and people would have very trouble getting into there. But with new access, new skyways being made, new tourism centers being established, various many of the development has been slow, but there has been development. So I do not have any points to say about that. We need development in case of tourism, because it is an employment generator, and it also drags a huge amount of foreign tourists, which is a very big foreign exchange earner for the government of India. It's a very good revenue. But what I value most in your topic today, that you have talked about two important things in your heading, which I think is very, very neglected in India and needs to be taken into consideration. Number is safe tourism, you have mentioned, and you have mentioned healthy tourism. Now, both these two are very important in the sense that I have seen less, wherever, in every part of wherever you go, there is no country in the world where there is no hooliganism, there is no pickpocketing. It may be less in some countries, it may be more in some countries, but there is no problem. Everything is hunky-dory, everything is bright and beautiful. Is not in anywhere in the world. So is India. So if you are visiting a big city and stuff, and if you are at the wrong time, at the wrong place, bad things may happen to you. But I sincerely believe that this has changed. This has changed significantly during this particular point of time. Our law and security and stuff has improved. But what I am talking about security is particularly safety and security for foreign tourists who are coming to India. Now, there is a challenge. I'm not saying that we have a huge law and order problem, but we do have an educational problem. Now, people who are getting into the police services, particularly at the lower level, their only basic language skill is their local language. So if you are in a Hindi belt, they can speak Hindi language. If you're in other states of India, in southern states, they will speak southern languages. Or if you are in other states, they are proficient in their local languages and little bit of Hindi and English, depending on which part of India you are.
But most of the time, it is that they do not have very good command of languages such as Hindi and English in other parts of non-Hindi belts. And even in Hindi belts, I do not see constables, lady, whether it's a lady constable, whether it's a main constable, they have very good command of the languages in English. You will never see any other language proficiency in any other police services, particularly at the lower level. So what happens sometimes is if a foreign tourist visiting India is having any kind of a serious problem, and if they are not good English speakers, like, no, the whole world does not speak English. So I think it is time for the state and union territories government as well for the central government of India, because the police sources, and who are they coming to? They are coming to the constables. Who are they reporting to? They are dealing with the police patrols on the street. And most of these people could not communicate in the sense that they could communicate among themselves, they could communicate to their higher authorities, but when it comes to communicate with the tourists, because their language is very limited, very few policemen at the ground level, at the lower level, can speak or understand proper English. So it is a very, very challenging part in that sense, that if a foreigner traveling to India, and if he or she is not speaking good English or could not express himself or herself very clearly in our languages, then it's a deep trouble. With police, even if you speak Hindi or even if you speak the regional languages, if you do not have the blessing of an MLA or a MP, if you are going to write a police diary or a FIR in India, only God can help you if it is a serious trouble. But even for smaller complaints that we can resolve at the street level, because the police can understand the language, they can reduce much of the street problems and stuff. But particularly with tourists coming from countries where they are not proficient with English, where they do not understand the English very clearly or can express themselves, this is a very serious issue that has happened. And it has reported in many magazines and newspapers across India, as also abroad, where foreign tourists has been harassed. Now, who are harassing these foreign tourists? The police is not actually harassing the foreign tourists. What happens is this, that because they do not understand language, they may have done something which has evoked a local sentiment of them. They may have, entered the temple inappropriately, or they may have behaved in the temple inappropriately, but it was not their intention to, throw an insult. It is just because of their cultural negligence. They may not know what they are doing. It may have happened. So, because of irresponsible people running around everywhere, so by harrowing them, circling them, threatening them, it leads a small problem, a small issue that the police could have easily resolved, sometimes turns into a bigger problem. Or the other is, there are touts or there are tourist guides and stuff. In the guise of the tourist guides, they will come and they sometimes look into vulnerable people and they have cheated their money. More so ever, there has been many cases where women has been hassled, women has been raped or gang raped, has been stolen or has been threatened and stuff. And when they have went to the police, they have complained that the police has not registered cases, or they have not been able to explain anything to the police properly, or there has been lack of sensitivity on the part of the police in dealing with these foreign tourists. Now, these things need to change. There was a long time, when there was these men officers used to come and arrest women. You can take and come at 2 o'clock in the night and you can arrest a senior citizen and you can take them to the police station. If you are a politician or if you are a celebrity, if you have a lot of money, then the Supreme Court and the entire court system of India has a different law for you. I'm not talking for those privileged elite social elites, but I'm talking about the ordinary people. If they go to the police station, if you don't know people, there is always a chance that you will get harassed. And if there is not a responsible police officer, or there are not responsible female officers who are well trained, particularly at the very, very ground level, then there is this challenge and problems happening. Now, why is this so important to take care of? Because tourism is a huge business and it spreads. No matter whatever the government of India, spends, say, millions of dollars or hundreds and thousands of dollars in the promotion of tourism, tourists believe on the mouth of the word of mouth, or like the horse's mouth. So people will believe. If I have a bad experience after coming to India, say when I go back to Australia, whatever I will say, people around me, including the press, will believe and trust me. And they will have a vision of India, and there will be an impact of other people coming to India in the sense that, oh my God, this is not safe for girls. Oh my God, there is always this chance of harassments and stuff.
particularly when you do not understand the languages and stuff. This becomes a very, very big challenge. So there needs to be police who needs to be extra vigilant in tourist seasons whenever they see that, I would say Goa police is way more vigilant and way more trained in dealing with tourists because they see tourists throughout the year. Delhi police may be a little bit more trained because they see foreign tourists throughout. Metro cities may be a little bit more trained, but tourism center does not always restrict to metro cities or grade 1 cities or grade B cities. It is spread across in very remote, rural, inaccessible areas, in forested areas, in areas where there is not much infrastructures and things like that. And if there are tourists there and if they are getting into problem, particularly I am talking about problem with respect to this security, goons harassing you, local people harassing you, or someone taunting a young girl traveling on the train and things like that, these needs to be taken into very serious consideration. I have traveled in Vande Bharat, and I have also traveled in few of these the express railways, and I have seen one important thing which I give credit to the railways is I have seen if a young woman is traveling alone in the railways. I do not know whether they have a system or something like that, but I have seen a lady officer comes and talks to that particular woman and provides her with a number and says, ma'am, you are traveling alone. Here is a number. If there is any problem you face during your travel, if there is any issues that you are feeling, please give a call into this number. Someone, an attendant or a police officer or a constable will immediately come to your support or help. I think this is a great, great, great support that the Indian Railways has started. Whether they have given a quality support or not, just this assurance that someone is going to come and look into you and look into your interest, I think is very important. I think same should be done to young women, foreign travelers or tourists who are traveling on bus, on railways or something like that, that if you are in trouble and sometimes, ma'am or sir, there is this number, please call us here and there is someone who comes into your assistance immediately wherever you face a problem. This will not only increase the credibility of tourism in India, but will also create a great tourism aura for India in other countries. If I place China and India side by side, I would say that China attracts 10 times more tourists than India, where India would have been able to attract that much of tourists and earn these revenues, is just because there is this breach or lack of security among the mind of the people who visits India, where the central government and the state government there needs to be training for the police to deal with foreign travelers who are coming to this country. We have to remember they are not only guests to this country, they are also Lakshmi, because they are bringing foreign dollars, they are bringing foreign currency to this country. They are helping to promote this economy, and they are the ambassadors. When they go back to their country, when they talk nice about the people of India or the people of India, it increases India's soft power in that country. It creates a brand image, it creates a good notion about India, and it creates more opportunities for people coming to India. As we could see that there are a lot of factories which are closing down, our job patterns are changing after the post-COVID situation. It is important to sustain tourism because this is a very emergent area of employment generation with various para or auxiliary associated cottage industries associated with it. Very many cottage industries where you make handicraft products. If people are coming from outside, they are going to buy your product. People who are making food, people who are serving as a traveler, tourist package providers, or tourist vendors, security guards, hospitality industries, everywhere, the hotels and everywhere, guest house, circuit houses, people to stay, everyone would benefit if the foreigners are coming. So it is important for us to provide them with that security, to understand and appreciate their culture, and also to maintain their privacy. The eve teasing of foreign girls is very common in many Indian areas, and I think the police and even the local people needs to be vigilant. How would you react if your daughter was in USA and people are heckling your daughter? You should feel the same. This lady who is being heckled in India because of her clothes or her dresses or her skin color is not acceptable. Many African tourists are harassed in India. Many Southeast Asian tourists are harassed in India for various reasons. There is a particular group of people who does these kind of thing, and their number is negligible. It is because the law of the land is not strong. In Singapore, if anyone hassles the tourist,
you will get the beating of your life right there on the street from the police officer. They will beat the shit out of you. You will pee on your pants, the amount of beating they will give you, even in Thailand. So these kind of street discipline by police constables needs to be trained, and this is to be done. So I think with the increase in security, the tourism area would definitely improve. The second part is health. What if a foreign tourist who comes in India and gets sick? What is the good part for them? Like whether they should go to the government hospital. Most of the time they may not feel very comfortable to go to the government hospital. If they are going to a private nursing home or something like that, just because they are foreigners, and our corporate doctors and corporate agencies, just like blood sucking mosquitoes, should not look for penetrating their skin and suck as much blood. So if someone has an injury on her leg, the doctor has done brain scans as a part of a security to do a full body check and done a full lipid profile for something where a feet has an ankle has been injured is outrageous. These things needs to change. There needs to be a monitoring and surveillance on the part of the government and auditing on what goes on in the private sector hospitals, particularly these the nursing homes which are growing up like mushrooms all across the cities and towns, and how they are acting. I do not have much complaint about the government facilities, because our government facilities are strained. Still, they are providing support to hundreds and thousands of people. It's a huge pressure. But the private sector, which has come in because we need the private sector to survive, because the government hospitals cannot provide treatment to everyone to their heart's content. But the exorbitant money they are extorting is almost, I think, has changed into a goon-like state. And particularly with the huge debate that is going on the medical systems in India on the Supreme Court, I do not want to make any mention about that, but it tells volumes about the weaknesses of Indian medical system, whether it is Ayush or non-Ayush or allopathic or something. So particularly for a foreign tourist who comes into India, and those who are not coming into India with some kind of a government medical insurance, I think we are putting these people, making them vulnerable, because every tourist that comes into India, to an eye of an ordinary man, everyone is a crorepati, which is not true. There are ordinary people who are also interested in coming and seeing India. Everyone who comes to India does not earn in crores. So if they have to be admitted in a hospital somewhere for them getting accidentally sick, I'm not talking about medical tourists. Tourists who are coming to India for a medical surgery or for a transgender surgery or for an Ayurvedic treatment, they are a totally different group of tourists. I am talking about ordinary tourists who are coming to visit India and getting sick. What kind of security and protection the government can provide them with respect to the health? In many countries in the West, if you have to go there as a travel, you are forced to buy what you call it a transit tourist medical insurance, so which protects you in that country. Say for example, you are in USA and you suddenly become sick, then these insurance will cover your protection or your treatment for certain time, so that you are at least fit enough to go back to your country of origin by air or whatever mode of transportation you are using. We do not have that kind of system for foreign tourists coming to India. Those who have huge amount of money, they can go anywhere. I'm not talking about them, but not every tourist has huge amount of money. So there needs to be a system of a health medical insurance for tourist influx in India, and they need to be catered for the treatment. I think with safety and security and this health, if the government of India or the state or union territory government could provide to the tourist, this will increase India tourists at least fivefold in the next 3 to 4 years. And both the state and the central government needs to invest in this area, because this is going to be one of the biggest and significant employment generator around in the next 20 years. As the world is getting closer to one another, as we are getting very close to one country to another, travel and transportation, tourism is becoming an important part of our global heritage and culture. So India must take advantage of that. And to promote tourism, we need to promote security and also provide healthcare for those coming to this country as a part of the tourism package. So not only your beautiful national parks, temples, heritage, streets, cities are important, it is also important to provide security and health coverage to the people
who are coming into this country. With this, I conclude my presentation. Thank you once again for giving me this opportunity to come to your platform. Thank you. Thank you so much, Dr. Sekhar Kumar Vasuji. Thank you. You have touched very, very sensitive parts. Though I've got one more guest speaker to talk on this issue on uh, this tourism. He is a Professor Nishan Shukla ji. What you raised is this is a very, very important factor because I am seeing the international tourists in India, of course, since 1980 when I was student in BHU and till date, because here in our country, there are those tourists, those who are coming with the hunger of knowing about Indian culture, spirituality, Ganges, and Ved, etc., etc. Of course, the knowledge. They are always respected very well. But I feel that for tourists, may they be belonging to any country, if they are well conversant with English language, they will not have to face a lot of problems here. Railways, police, etc., etc., they are always much more cooperative to them if they seek. We also used to see these things simply. It's not a matter of teasing or etc. They enjoy very much the Indian orphan child and all that. They used to distribute this toffee and balloons or Bengal, whatever they are having as the small kid demands. At the same time, they enjoy. They make the video and everything, and where they are little bit cheated, I should say, because if a watermelon say a person or muskmelon person says that it is a 5, now it's for her or the tourist to understand whether it is $5 or 5 rupees or 50 rupees or 50 rupees as far as the weight is concerned. There they can spend money like 500 rupees note, Indian note. So what when I feel and whenever I am passing through as a morning walker or evening walker, we definitely interfere and make the situation clear to them. And as far as our ashramas and these sites are concerned, Swargashram, Paramath Niketan, the great month and preachers, they well versed with English, they speak the Bhagavad, etc. They are in foreign countries, so they are always lovers of our international tourists. Of course, sometimes Chinese have got some problems because I had an occasion to deliver my lecture over the Indian recipes. So it was a difficult time because they are not knowing English, they are not knowing Hindi, and I was not knowing Chinese. So we have got a translator to make the things a little bit clear. So in that way, what I'm seeing right from Banaras to Haridwar to Rishikesh and Dehradun, they are most welcome. And so was the case with us when we were there in Tashkent. They found that you people are coming from India, the country of Raj Kapoor. They start singing the song "Mera Juta Hai Japani." So what I felt that it is really a good exchange of our this knowledge and culture and everything. So, but you raised a point very important that there should be safety and healthy tourism promotion. Then only India will get much more international currency and will get a good number of say tourists in coming years. Thank you so much, Dr. Sekhar Vasuji. Thank you. And now I invite Professor Nishan Shukla ji to please present his speech on our tourism day. Please. नमस्कार सर. स्वागत है आपका. नमस्कार. शेखर वसु जी ने काफी सारी जो है ये बातें रखी और खास करके जो सिक्योरिटी की बात थी ये डेफिनेटली जो है ये इम्पोर्टेंट थी. अब उसके साथ साथ being a medical person, I would like to focus on some of the issues that are related with the health prevention and to be taken care of during the tour programs. तो इनमें जो है ये किस प्रकार से हम टूर प्रोग्राम को डिजाइन कर रहे हैं, कौन सी एक्सर्शन हमको करना है, कौन कौन सी जगह पर जाना है, उनकी क्लाइमेटिक कंडीशंस क्या है, वहां पर होने वाले रोग क्या हैं, किस सीजन में क्या वहां के क्लाइमेटिक कंडीशंस से जो रोग होते हैं और कॉमनली उनके प्रिवेंशन के क्या क्या उपाय है, ये हमको जो है ये विस्तार से समझना
कोई भी टूर प्रोग्राम के पहले ये जानना जरूरी होता है। यहाँ पर एक चीज मैं हाईलाइट करना चाहूंगा, फ्लू के चैप्टर में सी पार्क प्रिवेंटिव एंड सोशल मेडिसिन की चैप्टर, प्रिवेंटिव एंड सोशल मेडिसिन की टेक्स्ट बुक सी पार्क ने काफी इम्पोर्टेंट ओपिनियन दिया है, और खास करके फ्लू इन्फेक्शन में, इन्फ्लुएंजा के इन्फेक्शन में इट इज बिट डिफिकल्ट to prevent the spread of the influenza infection globally, because there is increasing transits। ये काफी जो है ये ट्रांजिट्स जो है ये आज हो रही है, और उसके कारण स्प्रेड ऑफ इन्फेक्शन लोग कैरी करते हैं या फिर कैरी करके वापस लेकर के आते हैं, और उसके कारण ये प्रॉब्लम जो है ये होने लगती है। एड्स भी उसी प्रकार से ये हेती से यूएसए में, और यूएसए के बाद फिर पूरे विश्व में जो है ये फैला था। तो ये एक प्रकार से टूरिज्म के साथ रिलेटेड जो है ये एस्पेक्ट्स हैं कि किस प्रकार से हम उनको मैनेज कर सके, किस प्रकार से हम अपना प्रिवेंट कर सके। तो फर्स्ट स्टेप के लिए हाउ टू प्लानिंग फॉर दी टूर प्रोग्राम, ये एक जनरल गाइडलाइंस के रूप में मैं यहाँ पर जो है ये प्रस्तुत कर रहा हूँ। तो पहली चीज जो है कि कौन कौन से मेडिकल प्रॉब्लम द वन पर्सन इज सफरिंग, वन मस्ट बी अवेयर ऑफ द कॉमन मेडिकल इश्यूज दैट मे अकर इन ट्रैवलिंग टू अ स्पेसिफिक प्लेस। अब मान लीजिए कोई भी व्यक्ति गोवा वगैरह जा रहा है, तो वहां पर उसको जो है ये क्लाइमेट, ह्यूमिड क्लाइमेट है, मॉइस्ट क्लाइमेट है, वार्म क्लाइमेट है, और डिहाइड्रेशन वगैरह कॉमन है। तो ऐसे कंडीशन में डिहाइड्रेशन को मैनेज करने के लिए फ्रीक्वेंटली वाटर ड्रिंकिंग, और सॉल्ट एंड शुगर वाटर या फिर हनी के साथ पानी मिला करके मधुओदक के रूप में ये ले सकते हैं। थोड़ा सा सॉल्ट और थोड़ा चीनी मिला करके या फिर इलेक्ट्रॉल पाउडर के रूप में ये बना करके साथ में रह सकते हैं। वियरिंग ऑफ द लाइट क्लोथ्स दैट वुड एड अप ईज इन ट्रैवलिंग टू दोज एरिया। बट अगर कोई व्यक्ति हाई एल्टीट्यूड्स पर जा रहा है, तो वहां पर उसको कंप्लीटली जो है ये कंडीशंस अलग होंगी, और वहां पर थोड़ा ऐसी चीजें की जो थोड़ी उष्णता को बढ़ाए रखे। प्राणायाम की अगर बात करें तो प्राणायाम में गोवा के लिए या फिर सदर्न पार्ट ऑफ इंडिया में कोई अगर ट्रैवल कर रहा है, वार्म एटमॉस्फेयर वाले एरिया में ट्रैवल कर रहा है, तो वहां पर उसको शीतली और शीतकारी प्राणायाम का प्रैक्टिस करना ये ज्यादा जो है ये लाभकारी होगा। और जो भी व्यक्ति कोल्ड एरियाज में ट्रैवल कर रहा है, जैसे कश्मीर में ट्रैवल कर रहा है, लेह में ट्रैवल कर रहा है, और खास करके विंटर सीजन में, तो वहां पर भस्त्रिका का या फिर कपालभाति का प्रयोग करके अपने आप को हेल्थ को मेंटेन कर सकता है। तो फर्स्ट ये स्टेप कि हाउ टू प्रिवेंट वन सेल्फ। नाउ देयर आर सम मेडिकेशंस दैट नीड्स टू बी टेकन फॉर प्रिवेंटिंग हेल्थ, और कॉमन मेडिकल प्रॉब्लम्स को किस प्रकार से कैटर कर सके, उसके लिए कोई जो है एक जो है ये हेल्थ किट साथ में जो है ये रखना चाहिए। जिस प्रकार से मॉडर्न में हेल्थ किट का है, उसी प्रकार से आयुर्वेद में भी हम हेल्थ किट जो है ये बना सकते हैं। जैसे मान लीजिए कोई व्यक्ति को मोशन सिकनेस का है, तो मोशन सिकनेस के लिए वॉमिट सिरप आता है जो चरक बनाती, जिसका मूल जो है ये गंधशटी है, तो वो रख सकता है, या फिर गंधशटी का पाउडर या फिर छर्दी रस ये अपने साथ रख सकता है। तो इसके कारण ये अगर ले लेता है तो मोशन सिकनेस का प्रॉब्लम जो है ये कम होगा। सिमिलरली कुछ एक जो है ये च्यूइंग को अगर प्रैक्टिस करें, जैसे अजवाइन है, जैसे अदरक को एकदम महीन ग्रेट करके, कद्दूकश करके, उसको सुखा करके, थोड़ा नमक डाल करके उसको थोड़ा थोड़ा मुंह में रखे, तो जो मिचली आना वगैरह है, मोशन सिकनेस है, वो काफी हद तक ये कम हो जाता है। सेकंड, डाइट चेंजेस, वाटर चेंजेस ये फ्रीक्वेंटली जो है ये होते हैं। डाइट टाइमिंग चेंजेस भी होते हैं। तो डाइजेस्टिव जैसे चित्रकादी है, या फिर शंखवटी है, संजीवनी है, अग्निटुंडी है,
इनको साथ में रखना, ये काफी जो है ये अच्छा लाभ कर सकता है। साथ में थोड़ा जो है ये तेल का, एक छोटी तेल की बोतल भी अगर साथ में हो, तो ये नेजल इन्फेक्शंस को, नेजल रूट से होने वाले जो स्प्रेड ऑफ इन्फेक्शंस हैं, उनको ये इफेक्टिवली जो है ये कंट्रोल में हम रख सकते हैं। नेक्स्ट जो प्रॉब्लम आती है, अगर कोल्ड एटमॉस्फियर है, स्नो में जाना है, तो ऐसी कंडीशन में प्रॉपर एक्सट्रीमिटीज केयर, वहां पर फ्रोस्ट बाइट वगैरह का खतरा हमेशा जो है ये बना रहता है। इसलिए वार्म सॉक्स और ऐसे कपड़े जिनमें जल्दी सूख जाएं, और प्लास्टिक के क्लोथ्स या फिर उपवस्त्र का हमेशा जो है ये साथ में रखना या फिर वो यूज करना, ये प्रॉब्लम को कम करने में मददरूप हो सकता है। जो लोग ठंडियों में ठंडी जगह पर मुसाफरी कर रहे हैं, वहां पर थोड़ा जो है ये सौंठ का पाउडर, उसमें घी और शक्कर मिला करके लेकर के जाएं, तो उसकी टैबलेट वगैरह बना करके तो थोड़ी उष्णता वगैरह जो है ये रह सकती है। नाउ कमिंग टू द डाइट, तो जहां तक हो सके फ्रेशली कुक्ड फूड पर ही ज्यादा फोकस करना, और जो फूड गर्म होकर के परोसा जाए ऐसी फूड को प्रेफर करना, ये ज्यादा अच्छा है। जैसे गन्ने का रस है तो वो फ्रेश है तो उसको हम ले सकते हैं, इसको नीड नॉट टू बी रेफ्रिजरेटेड। सिमिलरली कोई होल फ्रूट अगर लेते हैं सामने का, उसके सामने काट करके, तो दैट वुड बी हैव ए बेनिफिशियल इफेक्ट्स, वो सूट करेगा। नारियल का पानी कटा हुआ इमीडिएटली काट करके ले तो उसमें दिक्कत जो है ये नहीं होती है। चाय अगर पी लेता है तो वो हमेशा जो है ये अच्छा रहता है, क्योंकि उसमें पानी उबाला जाता है, दूध भी उबाला जाता है, तो जो मैक्सिमम बैसिलस इन्फेक्शन का चांसेस है वो मिनिमम हो जाते हैं। तो ये हेल्थ केयर के लिए जितना थोड़ा गर्म खुराक या फिर जो गर्म करके सर्व किया जा सकता है वो बेहतर हो सकता है। उसको और एक थोड़ा मैं और एक एग्जांपल के साथ में क्लियर करना चाहूंगा। जैसे इडली हम खाते हैं, तो इडली के साथ सांबार भी होता है और चटनी भी होती है। तो इडली के साथ सांबार लिया तो वो जो है ये अच्छा है, क्योंकि उसमें सांबार को हमेशा उबालते रहते हैं, तो वहां पर इन्फेक्शंस के चांसेस ये कम हो जाते हैं। पर चटनी उबाली नहीं जाती, वो ठंडी की ठंडी सर्व होती है, तो वो बेहतर नहीं है। इडली खानी है या फिर वड़ा खाना है या फिर डोसा खाना है, वो उसमें दिक्कत नहीं है, क्योंकि वो गर्म करके ही, पका करके ही सर्व होता है। और उसके साथ आप रसम या फिर सांबार लें, तो उससे हेल्थ को होने वाला इन्फेक्शंस के होने के चांसेस जो है ये कम हो जाते हैं। नेक्स्ट, जो इन्फेक्शंस कॉमनली या फिर जो डिजीजेस कॉमनली एरिया में होते हैं, उनको कैरी करके आने का भी एक जो है ये प्रॉब्लम जो है ये हो सकता है। गुजरात का कोई व्यक्ति अगर ईस्टर्न साइड में जाता है, तो वहां पर कालाजार, मलेरिया फिर कालाजार, ये कॉमनली ये होता होता हुआ देखा जाता है, जो यहाँ पर नहीं होता है। तो ऐसी कंडीशन में ये डिसऑर्डर से ये हिस्ट्री जो है ये इंपॉर्टेंट हो जाती है। जब पेशेंट बीमार पड़ता है तो ट्रैवल हिस्ट्री से हम उसकी कोई अलग जो कॉमनली डिजीज नहीं मिल रहे हैं उनको भी हम इजीली आइडेंटिफाई करके उनको प्रॉपरली मैनेज कर सकते हैं। तो ये टाइम फॉर द डायग्नोसिस उसको हम शॉर्टन कर सकते हैं। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपने वक्तव्य को यहाँ पर पूर्ण करता हूँ। आभार। बहुत बहुत आभार, आपने तो दिशा ही बदल दी। टूरिस्ट टूरिस्ट तो एक स्टेप है, एक कदम हुआ, लेकिन हाउ टू मेक इट सेफ एंड हेल्दी, इसमें आपने वो पहलू छुए हैं जो एक चिकित्सक, एक मेडिकल पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट थे। आपने कई चीजों पे स्थान स्थान पे बताया। एक तो छोटी सी आपने पहले बता दी, जो मोशन सिकनेस को मैनेज करने के लिए बहुत ही अप्रोच, सीधी अप्रोच है और पोर्टेबल भी है। जो आपने कहा कि जैसे कि मॉडर्न मेडिसिन की कोई किट या कोई इमरजेंसी बना सकते हैं, इमरजेंसी बॉक्स या फर्स्ट एड बॉक्स बनाते हैं, वैसे ही अपनी चीजों में ये चीज आपने गिनाई। फ्रॉस्ट बाइट का भी नाम गिनाया,
हाई एल्टीट्यूड जाने पर रफनेस होती है, नेजल म्यूकोसा जो है बहुत ड्राई हो जाता है, हल्की सी खून की पपड़ी जैसे आने लगती है। उसके लिए टोटल लोकल रिंसिंग के लिए आपने अनंत तेल या कोई भी तेल का वो साथ रखा, वो अच्छा बताया। और ठंडक से बचने के लिए देखिए, जब आप ये सब बता रहे थे इसका मतलब ये था कि आयुर्वेद को इतने अच्छे से प्रतिस्थापित कर रहे थे कि वहां पर एग से लेके अल्कोहल तक का कोई रोल नहीं है, कोई उपयोग नहीं है, कोई उल्लेख नहीं है। तो शुंठी चूर्ण, वो चाहे गुड़ के साथ में हो या चीनी के साथ में हो, उसको तुरंत देता है। और हम लोगों के साथ में इसको हमने महसूस किया था जब पहली बार पूर्वी उत्तर प्रदेश से प्रकाश से निकल के आए। तो हम लोग तो एगिटेरियन तक नहीं, कुछ नहीं है। तो निश्चित से उन्होंने बताया कि मैं बहुत बहुत छींके आती, ठंडा लगता है। पिताजी ने सोंठ के पाउडर के ही आटा भून के और उसमें लड्डू और ड्राई फ्रूट हलवा बनवाए थे, जो है बहुत यहाँ पर सूट किया। और धीरे धीरे हम लोग फिर एक्लेमेटाइज भी हो गए। तो ये कुछ ये है जो हम इसको लेके चल सकते हैं। दूसरा, आपने बहुत ही उल्लेखनीय विषय बताया, बिल्कुल तय बात है। दिन में तो निश्चित रूप से चाहे एक बार 12-1 बजे तक इडली सांभर मसाला डोसा, ये कुछ भी सांभर के साथ में चटनी के साथ भी ले ले। लेकिन अगर ये डिनर का पार्ट बनता है या सूर्यास्त के बाद लेते हैं, तो इस निश्चित रूप से इसमें चाहे वो नारियल वाली चटनी हो, चाहे हरी पीली कोई सी भी लाल चटनी हो, वो नहीं लेना चाहिए। खोलते हुए सांभर के साथ में जब लेते हैं, और उसमें हमारा जो ये पड़ा रहता है क्या नाम, शिगरू शिगरू का जो पीस डालते हैं, तो उससे क्या है कि डोमेस्टिक के, उससे जो है बहुत ही अच्छा मैनेजमेंट हो जाता है, बैलेंस हो जाता है। और हमें कफज विकार भी नहीं होते हैं। और उष्ण उष्ण लेते हुए किसी भी एल्टीट्यूड पर भी अगर उपलब्ध है तो ले सकते हैं। बहुत ही आपका सार गर्भित और बहुत प्रैक्टिकल आपने बताया। और एक ट्रेवलिंग का भी आपने बताया कि ये तो विशेष रूप से हम लोग उसमें देख चुके हैं, भुगत चुके हैं कोरोना काल में, कि जो ये कहते हैं ना इसको, इंटरनल क्वारंटीन एक्सटर्नल क्वारंटीन का भाव यही था कि अगर जो ईस्ट टू वेस्ट नॉर्थ टू साउथ अगर कोई भी ट्रेवल करता है, तो वहाँ की होने वाली लोकल इन्फेक्शन शायद को कैरी कर सकता है, या मैंने खुद इन्फेक्टेड हो सकता है। और जो बाद में सब क्लिनिकल से क्लिनिकल स्टेज में प्रेसिपिटेट होते हैं, तो जैसा कि आपने काला आजार बहुत पुरानी चीज होता है, एब्रप्टली इंक्रीजिंग ऑफ स्प्लीन, तो उसका क्लिनिकल सिम्टम में आता है उस ढंग से ऑन एग्जामिनेशन। तो उन सब चीजों को ध्यान रखते हुए हिस्ट्री इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, दैट वेदर यू हैव ट्रेवल्ड फॉर लास्ट 15 days to 6 months in domestic tourism or internationally, that makes a lot of help to diagnose the patient is suffering from. तो थैंक यू सो मच, बहुत ही अच्छा आपने कोऑपरेट किया, अच्छे से बताया। आप सबका बहुत बहुत हृदय से आभार करते हैं। और डॉक्टर हमारे सगत बसु जी ने इंटरनेशनली सब प्रकाश डाला, आपने मेडिकल पॉइंट ऑफ से प्रकाश डाला। आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे साथ में डॉक्टर तेजिंदर जी अभी तक जुड़े हुए हैं, उनका ही बहुत बहुत आभार है, उनके अच्छा। अपने प्रेजेंटेशन के लिए भी। और अभी की हमारी इस वाली टूरिज्म की जो टॉपिक था उसके लिए, क्योंकि मुझे मालूम है आप भी इंटरनेशनल टूरिस्ट रह चुके हैं, अपने कजाकिस्तान में काम किया है, वहाँ भी डिफरेंट फॉरेनर से बात होती थी, वो आपकी क्लाइंटेज है, यहाँ आते हैं ऋषिकेश इंडिया में आते हैं। तो यू हैव गॉट सम sort of experience on this topic. If you like to say something, you are most welcome. आपका स्वागत। कुछ कहना चाहेंगे अगर आप अपने इस टूरिज्म के फील्ड में कुछ अपने अनुभव शेयर करना चाहें, तो स्वागत है आपका। डॉक्टर तेजिंदर, आर यू लिसनिंग मी? अगर आप हमको सुन पा रहे हैं, तो आपके कुछ अंतर्राष्ट्रीय इस पर्यटन के दृष्टिकोण से अपने टूरिस्ट के साथ में, लैंग्वेज के साथ में, रेसिपी के साथ में, उनके उनकी क्वेरीज के मामले में, उनके आयुर्वेद योग के प्रति इंक्लिनेशन के मामले में, इफ यू हैव गॉट योर सम पर्सनल एक्सपीरियंस, यू कैन शेयर ओवर हियर। डॉक्टर तेजिंदर, आर यू हियर? I think this is the right time to wind up. So, owing responsibility, I myself uh, expressing my deep sense of gratitude to all the guest speakers of our all the 3 webinars, which are based especially on today's different topics, like different therapeutic use of our Yoga Shastra or Yoga technology or Yoga science or Yoga philosophy। और उसके वक्ताओं का हम धन्यवाद करते हैं।
हमारा जो ओवेरियन कैंसर के मामले में मैडम पारुल जोशी जी ने अपना बहुत ही अच्छा व्याख्यान दिया, उनका धन्यवाद करते हैं। और तीसरी वेबिनार जिसमें कि हमने टूरिज्म में सेफ्टी और हेल्दी टूरिज्म के लिए जो प्रमोट किया, उसके हमारे गेस्ट स्पीकर्स डॉक्टर शेखर दस्ती, डॉक्टर निशांत शुक्ला साहब का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। और इसी धन्यवाद के क्रम में सभी का एक बार ओवरऑल अपने गेस्ट स्पीकर्स के साथ साथ यूट्यूब पे जुड़े हुए हमारे दर्शक, हमारे श्रोताओं, उनका सबका धन्यवाद करते हुए प्रोफेसर पवन शर्मा जी को निवेदन करते हैं कि आज की तीनों ही वेबिनार्स को संपन्न हो गई हैं। तो शुभ रात्रि के साथ में इसको पूर्ण करने के लिए नमस्कार, सभी को शुभ रात्रि। जी सर। सभी को शुभ रात्रि, बहुत बहुत शुभ रात्रि। बहुत बहुत गुड नाइट, गुड नाइट, गुड नाइट, शुभ रात्रि।